Hello everyone. Now this is the third video of class 11 MySQL unit 4. Now again, watch the videos in proper sequence. Don't skip any video and directly come to this one. In previous videos we have seen how to create a database, how to create table, how to use show command, use command, description command, drop commands, alter commands. Okay, so basically all DDL commands. So now we are going to use DML commands, that is data manipulation language. So in this, now we are going to work with actual data. Okay, right now we are just creating the table. अब हम उसमें data add करेंगे, enter करेंगे and then उस पे work करेंगे. So what you have to do is, in your textbook where the chapter ends, okay, there was one page, points to remember, and before that page a table is being given. On top of that page, that table you have to create by yourself, and once you create the table, after that we will start making the queries for that. So the first thing is, the table is, again I have created the previous all databases, and so freshly I am creating new database called schools, and here we are going to create a table in this. So the name of my table will be student. Okay, now so I have created a database, and okay, first I have to use schools database change. Now I can create a table called students. Yeah, just student. Sorry. Okay, so I have to add the columns over here. Now to add the column, what I first need is, for creating the student column, I need column called roll number. So I will write R and O for that. The roll number will be of integer type. Okay, so we have specified the data type, comma, next column will be first name, so we have written F name. If you want, you can use that underscore. So this is first name. Obviously it's going to be varchar, because name is not of fixed length, and in bracket we will specify the length. Let's say maybe 25 will do, right? Next column will be last name, that is for short we have written is L name. It's also going to be varchar data type. Again we can specify it as 25. Next is gender. Now gender will be, we will just write M for male and F for female, so it's of one character we are using, and so fixed length, so we will use char and 1. Next I want to add date of birth of student. Okay, now date of birth, data type will be date. Okay, next is, let's say, marks. Now marks will be in decimal, and max is going to be 100. So let's just write, or let's say if I want to find multiple subject marks or something like that, just for safekeeping, let's take 4 over here. Okay, and 2, and I have closed the final bracket also, and this. Now let's just add the primary key right now. So what's the thing which is going to be
unique for all the records, that's roll number. Okay, it's not going to be common for anyone. Rest of the details can match. So I'm writing this as my primary key, so it's going to be my primary key. Okay, next, rest of the details are not required. Okay, I mean no rest constraint are not required over here. Or we can add this as first name cannot be not null, so we can add maybe not null. Okay, and after this we will just execute this. So आ गया आपका query. Okay, if you want to see, you can check the description of student. Now these work we have already created in previous videos, so we are just creating a fresh one. Okay, so it's showing primary key है, roll number no तो by default आ जाता है इसमें not null, and first name also is not null. Now I want to add the details. Now again, to add the details there are various options to do this. The first way to write the query is, the command we are going to use is insert. Okay, so the command is called insert command. So we will write insert into, here we specify the name of the table. So the table is student. Insert into student values. Here directly we can specify the values we want to add. For example, roll number is 1. Now I am adding the values according to that table I have told you. Okay, so that when we perform the query, and if you are having any confusion, at least I can go through this. So roll number is given 1 over here. First name is Abhishek. So I will add the details like this. Okay, now remember, 1 is roll number, the data type is integer, so it will be written like this. But this is varchar first name, so we have to write it using double quotes. Okay, now after this, last name is Narula, so we will again put double quote and write next is gender, so it's char, just write single quote M. Date of birth is again written as single quote, so it's written here, we will just write it as it is, 1998-10-05, comma, marks are given 98, so it's a decimal number, so simply हम इस तरह से लिख सकते हैं. If you want, you can write, let's just try this. ठीक है, and execute. So आ गया आपका 1 row affected. If you want to see whether it is been added to this or not, we use the command called select, and select के बाद हम लिखते हैं star. ठीक है, now this is a wild card character जिसका मीनिंग होता है all, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी रोज है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें शो हो जाएगी. तो select this asterisk, एंड हमें इसमें कमांड जो होती है वो लिखते हैं हम, इसके बाद आता है from. ओके, दिस इज द सिंटैक्स जो आपको इसी तरह से लिखना है, select star from, यस from, एंड टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट. सो स्टूडेंट में से हमें रिकॉर्ड चाहिए, therefore we are going to write and execute. Now you can see the records are being added. Similarly, we will write all the records in this table. Now
Now this is first way to add the record. The second one is if you want to change the sequence of your record entering, although this is a lengthy method, so what you have to do, if I want to change the sequence, okay, so after writing insert into student, you put a bracket over here and you write all the name of columns. Suppose I want to add first name first, then I want to add last name, then I want to add roll number, after this I want to add date of birth, after this I want to add let's say marks, and then at last I want to add gender. Okay, so this is also can be done. Now I have to change the values obviously, so let's just add second row in this. So first is our first name, so it's Abhishek. Okay, it's in your book. Then we have last name as Pahuja. Next we have gender as male. After this we have sorry, we didn't have gender. After this we have as a sequence we have roll number, so roll number is 2. After that we have date of birth as 1998 12/30. Okay, then we have marks which are 92, and then we have gender as male. Okay, execute. So this is second way. This is used if you want to change the sequence of the columns, although it doesn't matter because when the output is given it will be displayed in the original sequence. Okay, so this is just a lengthy method, so in general we just use this one. Okay, the first which I have told. So the third way is if we are using a default constraint. Suppose I have written marks as default 100. Okay, by default if I didn't write marks, इसका मतलब है कि 100 होगा. Then I can leave this column and वहाँ by default 100 automatic fill हो जाएगा. But because I have not added this constraint, so it won't work right now. So using these आपको सारे ये enter करने हैं records. When you see the table, आपका वहाँ से 1 से लेके 16 तक के रिकॉर्ड हैं एंड बीच में 9, 10, 11 एंड 12 4 रिकॉर्ड्स आर मिसिंग ओवर देयर. सो जस्ट आप उनको स्किप कर देना. जस्ट मेक द टेबल जस्ट लाइक इट इज शोन इन द बुक. ओके, बीच में जो स्किप है रोल नंबर, जस्ट स्किप दैम एंड देन हम बाकी के रिकॉर्ड्स पे वर्क करेंगे. इतना काम आपको प्रैक्टिस करके आना है. दैट इज नेसेसरी टू डू बिकॉज आप साथ साथ में अगर वर्क नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा आपका बैकलोड हो जाएगा. ओके, फिर आप क्या क्या करोगे एट अ टाइम दैट आई डोंट नो. सो इतना करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीक की क्लास में आपको मैं बाकी की क्वेरीज इन्फॉर्म करूँगी कि कैसे रन करनी है. ओके, इसमें एक और ठीक है सारे कॉलम्स हैं. अगर इनमें एक कॉलम होता है, सपोज यू डोंट नो द इंफॉर्मेशन ऑफ सम रिकॉर्ड, लेट्स जस्ट ट्राई दिस. आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करते हैं. इफ आई वांट टू ऐड अ थर्ड कॉलम, okay, although it was not given in your textbook, but let's just learn this one. The third column is Bhushan and your last name is Verma. So
also male. Fine. The putting the record in a sequence is not necessary. If you want you can write the 16th record first, उसके बाद आप 8th record enter कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, the sequence of rows and columns, it doesn't matter. 1998 02 27 and it's 95. Okay, now let's say I don't know his marks right now, so what we can write the value as null. Okay, so the value of null means right now I don't know his marks. अभी मुझे इसके मार्क्स नहीं पता है, therefore हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, null. So you can write like this also. And just remember one thing, आप एक ये कॉलम ना null वाला ही ऐड कर लेना. It's not given in your textbook but आप ऐड कर लो so that जब हम वर्क करना चाहे क्वेरीज में तो हम प्रॉपरली वर्क कर सके. ठीक है, सो बीच में कोई भी और 2 कॉलम्स में आप नल वैल्यू ऐड कर देना कहीं पर भी. ओके, फर्स्ट नेम तो हो नहीं सकता एंड रोल नंबर हो नहीं सकता, रेस्ट एनीवेयर यू कैन ऐड लाइक दैट. सो आफ्टर दिस इसको रन करेंगे. ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू सी आपके क्या क्या वैल्यूज ऐड हो गई. नाउ यू कैन सी 3 रोज ऐड हुई हैं एंड यहाँ पे नल वैल्यू शो हो रही है. सो दिस इज हाउ यू ऐड द वैल्यू. एक और तरीका होता है, लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग. व्हाट इफ आई ऐड अ 4th रो? वेल आई वांट दिस टू बी इन योर असाइनमेंट बट लेट्स जस्ट सी दिस. 4th रो आई वांट टू ऐड एंड दिस इज Shefali and female, and this is now rather than writing 94, okay, I am just leaving this record as it is. Now let's just see what happens. Okay, and हम यहाँ पे different टाइप में ट्राई कर दें कि होता क्या क्या है. आपका एरर मैसेज आ गया. Why does it show the error? Column count doesn't match value count. आपके कॉलम्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं एंड हमने एंटर किए हैं सिर्फ 5 कॉलम्स, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एरर आ गया. ओके, सो एक तो ये होती है एरर का. सो यू शुड नो कि अगर आपका एरर आया तो क्या क्या होगा. देन लेट्स से कि मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया एंड आई हैव लीव सम स्पेस ओवर हियर, सो जस्ट लेफ्ट सम स्पेस एंड ट्राई अगेन. इस तरह का आपका मैसेज आ गया. लेट्स जस्ट ट्राई अनदर थिंग. लेट्स जस्ट पुट सम स्पेस विद डबल कोट्स. अगेन आपका क्या आ गया, इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू. सो इस तरह के आपके डिफरेंसेस होते हैं. ओके, यू कैन राइट नल ओवर देयर इफ यू वांट इट टू बी ब्लैंक. आप इस तरह से खाली नहीं छोड़ सकते या आप इस तरह से कोट लगा के नहीं खाली छोड़ सकते. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. द सेकेंड थिंग इज, लेट्स जस्ट ट्राई अनदर थिंग. The marks I am putting 94 over here, but place of last name I am giving some spaces and just try to execute. अब ये execute हो गया. Why does it happen? ऐसा क्यों हुआ? The reason for that is, let's just first see the answer of this. सी नल का मतलब है कि वो ब्लैंक स्पेस हमने वहाँ पे, मतलब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हमने नल लिख दिया. नाउ हियर आई हैव केप्ट इट ब्लैंक. सो जब हम वैर कैर या कैर यूज करते हैं, बेसिकली इट्स अ टेक्स्ट.
टेक्स्ट के लिए यूज होता है। एंड टेक्स्ट में जब मैंने ये कोट लगा के ब्लैंक स्पेस देकर कोट लगाया, तो ये जो ये स्पेस देते हैं ना, इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं। ओके, वी कॉल्ड इट एज व्हाइट स्पेस, व्हाइट सफेद वाला व्हाइट स्पेस। सो ब्लैंक जो स्पेसेस होती हैं टेक्स्ट में वो भी काउंट होती है। सो बेसिकली जब हमने इस तरह से लिखा है तो यहाँ पे इसने एक वैल्यू कंसिडर करी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यू ली गई है ब्लैंक स्पेसेस की। सो दैट्स हाउ, इसलिए ये रन हो गया। ओके, सो विथ दिस आपका आज का सेशन कंप्लीट।